Hello and good evening, everyone. So, um, I hope you all are fine. And today we will be starting with the topic of stack. Okay. Previously, we saw how binary search worked and a few questions on it. I have uploaded it on Notion, and I have also uploaded few more questions on Notion, so you can look after that. Okay. So, our today's topic will be stack. What all are the things that we'll discuss? First, we will discuss the concept on stack. That will also include the STLs that we use, especially in C++. Okay, the STLs, the methods, and all. Second, we'll do two questions that are the first one would be yeah, valid parenthesis. So the first is valid parenthesis, and the second one will be min stack. Okay, min stack. You can also note the question number 20 and 155. Okay, this is 20 and this is 155. These are the questions that have been like seen in the interviews of Google and Facebook. So it's picked up from there. Okay, we will somewhat focus on that side only. We'll learn and we'll enhance our concept using the questions only and understanding how we are using this particular stack into our problems. First of all, coming up to the concept. So what is stack? How it works? We'll be looking at that first. Okay. So stack is a data structure that we can use to hold elements of any sort, right? It can be a string, it can be character, it can be integer, it can be long values, double, float, anything. Okay. Now, stack is a data structure that does is not only used when we are storing values or elements, but it is also used when we are storing callback functions and the operating system internally uses stack kind of data structures for like day-to-day activities that happens on this operating system itself. So um, there is also when we have like processes that run on the operating system. So we have certain like algorithms that focuses on stack to run those processes. The process that comes first is done at the last. So that is also one kind of thing, and there is also that the process that comes first is done first, and so on. So it holds elements or values that we are considered that we consider right now, or it also stores callbacks and other functions internally and is also used by the operating systems and multiple other purposes. Okay, so now let's see how we can visualize stack and how we can like understand it better if we because internally the data structure works in like machine languages and all, but we can like visualize stack as an empty box where we'll be putting elements one by one. Okay, so let's say this is a block and we put block here one by one, right? So we put one block. So after some time, let's say we put another block. So where it will come? It will come here, right? So this is the kind of visualization that we can use for stack. If anyone has played that game where the game blocks, that game is also based on this stack visualization only. You know, it like falls the block falls from above. These kind of blocks, right? If you remember, these are the kind of blocks that fall. This kind of blocks. And when you create a layer, and if you fall this or here, then it's just kept above this. And once you fill the gaps and reach the top, you
like lose, the game is over, right? So this is how the stack also works. Now let us look at the operations that we can perform while putting these elements one by one here. So let's say after some time we put quite few amount of elements here. Say we have A, B, C, D. Imagine these as blocks. Okay, these are the blocks that we have in the stack. So the operations that we can perform on a stack are the operations that we can perform on a stack. The first one is push operation. Okay, what does this push do is it pushes your element into the stack. As simple as that. Pushes your element into the stack. Now, how long will it push the element into the stack? I mean, it can't go infinitely, right? You have a constraint of storage memory, right? So, not memory actually, but storage. So you have initially assigned a particular storage to uh, a particular variable in that stores the stack. Okay, so the stack has a definite storage, so it will only accept until स्टैक इज फुल. एक बारी भर जाए फिर वो और ज्यादा ले नहीं पाएगा उसमें. ठीक है. The second operation that we perform on stack is pop operation. What does the pop operation do? It simply pops out the element that is on the top of the stack. Okay, pops element, one sec, on the, or rather that is on the top of the stack. Cool. Now, how long will it be able to pop out things? Until and unless there are things in the stack, then only it will be able to pop out, right? So once the stack is empty and we have nothing to pop out, so you can't do this operation anymore, right? And this is done till stack goes empty. Only then you can perform these operations. What is the third type of operation that we can perform? It's called top. This top is nothing but it just returns the value on top. Value on top of the stack is returned. ठीक है. मतलब अभी यहाँ पे अगर हमने हमारा नाम ये st है stack का नाम and we write st dot top, तो ये क्या रिटर्न करेगा? This will just give us d, right? Okay, इस तरह से वो top value काम करता है. Now there are a few more. We can also define few operations on stack if we create our own stack. Like if the stack is empty or is full, so we can define those kind of operations and then we can push and pop accordingly. What the STL provides, there is a STL in C++, STL, that is standard template library, which has a which has an inbuilt data structure named as stack. So you can directly use this data structure in C++. How we will be using this, we'll be looking at it in a moment. Okay. So what would be the next operation that we are performing is we can check if the stack is empty. So this returns a Boolean value, returns Boolean, that is true or false, depending on whether the stack is empty or not. Okay. So depending on, right, emptiness.
whether or not the stack is empty. One operation that we are going to use today will be size. As we have used vectors dot size, the vector name dot size, the set name dot size, the map dot size. So in the same way, we can use this stack name dot size to return the size of stack. Now in C++, let's see how we can use this particular thing and how do we initialize stacks. So initialization. So in order to initialize a stack in C++, you can directly write stack, and here you will define the data type of the stack that you want to create and then the stack name. Cool. So this will be a dynamic stack. Okay. So यहाँ पे हमें size का कुछ मतलब वो full का कुछ नहीं देखना. Until and unless we are putting elements in the stack, it will accept it, right? It will not look for if the size goes full. It will automatically allocate uh, like larger value of sizes if we need more size. Cool. So this is a benefit if we use the HTL in the C++. We don't have to look in the we don't have to consider looking at the sizes every time we are pushing element into the stack. Okay. So this is one way of defining stack. What can be the other way is if you write say stack, again data type, let's consider integer st, and if you define some other stack name here, or rather let's what we you will see in questions is something like this. When you have to define a temporary stack that will hold on to the stack which we use. Why we define that? Let's see how and why we define this. Suppose we need to traverse in a stack. तो हमारा एक stack ऐसा होता है. से पहले A डाला है, B डाला है, C डाला, D डाला, E डाला. अभी अपने को इसमें traverse करना है. So we can only access the top element of the stack. This using st.top. Let me write how we are using this. If the name is, let's say we define a stack on integers, we named it st, and we can write st.push a, push b, push c, push d, push e to put things in a stack in this manner. And once we write st pop, it will pop out whatever it contains in the top of the stack. We can also check st.top. We can check st.empty, st.size as we used in the vector forms. Okay. And one thing let me mention here, the type of data structure it is, that is LIFO. Many of you would know be knowing what it means. That is last in, first out. Okay. The other one is FIFO that we'll study in Q and all. So LIFO is last in first out. जो last में गया है वो पहले निकालेंगे. Okay, क्योंकि दूसरा साइड से निकालने का जगह नहीं है. पहले इसको निकालेंगे, then we'll be able to reach till A. Cool. Let's see now, why do we need a temporary stack? Suppose we need to traverse the stack and somehow let's say we need to reach this A value. So in order to reach this particular A value, what we'll have to do is we'll have to remove everything that is here in the stack to get A. Only then we'll be able to get till A. So but we don't want to remove everything from the stack, or else, I mean, if we have to use it in future, then we will have nothing left. So then we define a stack which is a temporary stack containing this particular list only. So temporary. हमारा stack जो है वो वहाँ है ही actual वाला A B C D E के साथ, but हमने एक temporary stack बना लिया. अब हम इसके साथ जो भी करें, right? So you are not you're not changing the original stack, and hence in order to traverse we need a temporary stack.
And what we can do is while temp.empty, rather while not temp.empty. So while it is not empty, you read the value or you like access the value here and then you pop out the value. So temp.pop, right? This is the code that is required in the problem or whatever you want to do with it. And this is how we'll be traversing in a stack. This is also called pseudo traversal, because we are not traversing the original stack, but we are creating a temporary stack and then we are traversing into it. Okay, all right, fine till now. Do you have anything left to say? Um, I don't think so. Let me tell you one thing: how if you create a stack in C or C++, your own stack, then how you will do it. First of all, you will create a top value that will be initialized to -1. Okay. Now, whenever we have to push things into the stack, we will we will insert it after doing plus plus top. So what it will do is once when it is -1, it will go on to 0 and then we will push the value, right? तब यहाँ पे कुछ value आएगा and so on and so forth. Every time it will plus plus top top यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे. अभी जब हमने एक push करना है कुछ तो top पहले यहाँ पे करेंगे और फिर push करेंगे, ठीक है? और जब release करना है, that is when we have to pop it, तब क्या करना है कि इसको हटाने के लिए वी जस्ट हैव टू डू टॉप माइनस माइनस टॉप माइनस माइनस टॉप माइनस माइनस अंटिल टॉप इज इक्वल्स टू -1. यहाँ पे आ गया, मतलब हमारा ये एरे और रादर स्टैक एम्प्टी है एंड वी कांट पॉप आउट एनीमोर. ओके, तो इसी तरह हमने बस टॉप माइनस माइनस करना है और कुछ नहीं. तो उस तरह से हम पॉप करते हैं. साइज एंड ऑल इज यू कैन लाइक डायनेमिकली अपडेट अकॉर्डिंग टू द पुश एंड पॉप ऑफ द एलिमेंट. अगर पुश हुआ तो साइज प्लस प्लस कर देना है, पॉप हुआ तो साइज माइनस माइनस कर देना है. ये सारा एक स्ट्रक्ट के अंदर तुम बना सकते हो सी में खुद से, एक स्ट्रक्चर के अंदर. सो इफ यू वांट टू सी हाउ टू क्रिएट योर ओन स्टैक, यू कैन सी इट समवेयर, यू कैन रीड इट एनीवेयर, whether GFG or YouTube or anywhere. Okay, so you can find how to create your own stack, but this is the general basic concept behind it. Cool. So I guess we have discussed things that are required to know, and now we can move on to the questions that we have to do today. Okay. The first question that we'll be tackling is valid parenthesis. Now, valid parenthesis has its own importance, right? Like whenever we code in VS Code or anywhere in any language, if we have opened a bracket, we need to close the bracket, right? So let's say if we have opened this bracket and then we have opened this bracket, first we'll have to close this bracket and then we'll have to close this bracket. Okay, only then this is valid, right? If we have opened it here, then we are closing it at the end. Okay, it's just like HTML tags. So if we have a body tag here and a paragraph tag here, first we will be closing the paragraph tag and then we will be closing the body tag, right? This is the same concept that we use in the brackets of the coding structure. Cool. So this is what we have to consider in this problem statement, and that it says given a string S containing just the characters, all the three kinds of brackets, opening and closing included, determine if the input string is valid. An input string is valid if, see, open brackets must be closed by the same type of bracket, of course. Opening bracket must be closed in the correct order, which I'm saying. See, we have opening, so we close it first, and then it's like common sense, right? Then every closed bracket has corresponding open bracket of the same time, of course. So it basically says this. This is also acceptable. Like you are opening this, closing it, opening this, closing it, opening this, closing it. So it's fine. Okay. So how are we going to tackle this question? Let's see. So this is quite simple. What you can do here is
whenever we are encountering a character like this or this or this, what we are gonna do is like think for a moment what it says, what it wants you to uh, get, okay, and why this can be done using stack. It can be done using stack is because अगर हम लोग stack में check करेंगे कि हमने ये ये open किया है, ये open किया है, तो हमें close क्या क्या करना है, पहले इसको close करना है और फिर इसको close करना है, राइट? समझ रहे हो क्या? पहले पहले वो close होगा फिर ये close होगा, राइट? तो whenever we are encountering things like this, देखो इस पॉइंट के बाद यहाँ ये दोनों तो हमने इंसर्ट किया, बट जब हम ये इंसर्ट करने को जाएंगे ना, तो इसको इंसर्ट करने से बेटर है जिस भी ब्रैकेट को ये क्लोज कर रहा है उसको हटा दे, पॉप आउट कर दे। ठीक है, ये दोनों का पॉप किया और उसके बाद हमारे पास ये बचा है और उसके बाद ये आया है, तो ये दोनों को पॉप किया। और अगर हमारे पास एम्प्टी है, if we are not left with anything, then we can say that the order in which the parentheses were given was correct, right? अब नाउ लेट्स से कि हमें ये दिया है, ये ओपन किया बट क्लोज ये कर रहे हैं, तो हमें चेक करना होगा कि जो भी ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, जो ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं यहाँ पे, और रादर यहाँ पे खुलने से कोई मैटर नहीं करता ना इसको। यहाँ पे बंद, यहाँ खुला है तो पहले ये बंद होगा, है ना? ये बंद नहीं हो सकता, ये अगर अगर ये यहाँ पे खुला है, even if this is opened here, you can't close it here because then the order will be something like this, ऐसा। Is it valid? No, you can't close this without closing this particular thing. First you need to close this particular thing. So instead of this, if this was the case, then it would be accepted, but since this is the case, then it should not be accepted, right? And hence we come to a conclusion, first of all, that we'll be using stack. Oh, sorry. First of all, we know that we'll be using stack. Well and good. Second, after like thinking a bit more, we get a intuition कि we need to every time check what is present at the top of the stack. Are we closing that particular bracket first? वो close नहीं किया तो नीचे का कोई close नहीं कर सकते. So we need to check वो stack का top वाला bracket. ये आया एक intuition में part. मतलब ये समझ आया हमें. और कुछ if we can see, और कुछ समझ में आ रहा है इससे? और क्या क्या हो सकता है? एक चीज जो हमने बोला कि at the end our stack should be empty. Okay. Any more inputs did we get from this question? Um, hmm. See, if we have nothing in the stack, if the string is only empty, then we'll return. Then we can't consider things like right. So in this question, okay, we don't have it. If we are directly having these kind of brackets in the first position of the stack only, तो ये भी valid नहीं होगा, ठीक है? ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पहले ओपन करेंगे तब तो क्लोज करेंगे, ठीक है? So let's see how do we code this now. These are the things that we'll have to consider. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टैक लेना है, तो हम स्टैक ले लेते हैं कि स्टैक। अब अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो उसके अंदर का एक एक चीज जो होगा वो कैरेक्टर्स होगा, तो ये डिफाइन किया है, ठीक है? ये डिफाइन किया। इससे भी पहले हम एक काम कर सकते हैं कि हम ये लिख देते हैं कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो खाली रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है? और अगर लेट्स सी इफ दैट इज इन द टेस्ट केस, पहले हमने क्या किया, एक स्टैक बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं i इज इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन जो हमें साइज स्ट्रिंग दिया हुआ है उसके साइज तक i प्लस प्लस, राइट? And now we need to consider each and every characters that is inside this string.
So how are we going to do that is, जब जैसा कि बोला, this should be the things that we are pushing, and these are the things that will be popping out. Okay, so we can directly write कि if जो हमारा s है उसका ith कैरेक्टर जो है is equals to opening bracket of this, ठीक है, और this equals to opening bracket of this, और this equals to opening bracket of this. तभी क्या करना है, तभी स्टैक में बस आप पुश कर दो, पुश s of I, सॉरी, ठीक है। अभी अगर ये सारे कैरेक्टर्स आता है तो पुश करते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, else if the characters are closing brackets, but we need to take care of one thing. ओके, इन पुशिंग तो ठीक है, हमारा ये डायनेमिक है, दिस इज डायनेमिक, सो हमें साइज का केयर नहीं करना, बट जब हम पॉप कर रहे होंगे, so these are the things you need to have in your back of the mind so that you don't make any mistakes. Okay, जब हम पॉप कर रहे होंगे तो we need to very carefully know whether the stack is empty or not. If the stack is empty we cannot pop. Okay, so we need to check if empty, ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे करते हैं पहले, if our stack is empty, तब तो वो पॉसिबल नहीं है ना, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, और नहीं तो क्या करेंगे, उसके बाद आता है कि what are the characters we can insert if s of I is equals to this, or okay, na see, we are forgetting one thing. What did we say, we need to check st.top, तो हम पॉप कब कर रहे होंगे, ये तो पुश ऑपरेशन है, दिस इज द पॉप ऑपरेशन हियर, दिस इज द पॉप ऑपरेशन हियर, तो पॉप कब कर रहे होंगे, जब हमारा स्टैक का टॉप एलिमेंट जो है वो उससे मैच करे ना, मतलब अगर ये वाला ऊपर में जाता है, सॉरी, अगर हम ये क्लोज कर रहे हैं तो हमारे स्टैक में टॉप में ये होना चाहिए, तब तो ये क्लोज कर पाएंगे स्टैक के टॉप में, व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये ओपन हुआ है, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट ये है, तो हमें चेक करना होगा कि ये हमने ओपन किया है जस्ट, तब तो क्लोज करेंगे, so we need to check if s of I is equals to this bracket, then we will need to check if st.top is equals to the opening of the same bracket or not, right, or we'll write the same condition for the rest of the brackets. Okay, if we are closing this, then we need to check if st.top is equals to opening of the same bracket or not. Okay, character, so a single apostrophe will do, and s of I is equals to a closing bracket of this, st.top is equals to a closing bracket of this. अगर इनमें से कोई भी होता है, मतलब ये पूरा पूरा conditions एक एक satisfy होता है, we should have a bracket here, we'll give and we'll code it. If these are the conditions that are true, then we can do is pop out the top element of the stack, और end में we return st.empty. Why we return st.empty? As I told you, the empty returns a boolean value which tells returns a boolean value which tells whether or not the stack is empty. तो अगर stack empty हुआ, अगर stack empty हुआ तो ये true तो auto return कर देगा, और अगर stack में फिर भी कुछ बच गया कि like I have opened this, I have opened this, but I have closed just this, so stack से ये वाला part हट जाएगा, but we have this in the stack again, right, we have this left, so that is not a valid parenthesis, right. अभी देखो इसको कोड करते हैं, let's go. So we'll go as we decided. First of all, we can check if s dot size is 0, then we just return true. After returning false, we are creating a stack of characters, emit st,
Then for every int I is equals to 0, I will place an instance size plus. What are we gonna do? We are gonna check if the s of I is equals to opening brackets or not. Only then we'll be pushing it, right? This is the case. S of I equals to this, or s of I equals to an opening of this bracket. If this is the case, then we are pushing s of I into the stack. Cool. Now we are looking at the popper operation, which comes in the else case, because we can't have both simultaneously true, right? So उसके बाद वो else case वाले में आएगा. Else में अपने को, as I told you, we need to check whether or not empty, whether we can pop or not. Pop तो तभी करेंगे ना जब कुछ होगा. तो अगर empty है पहले से, so simply return false. Else if एक ब्रैकेट देते हैं, s of I equals to ये ओपनिंग ब्रैकेट और उसका टॉप पे वही होना चाहिए. तो s of not s of I but st dot top is equals to a opening bracket or not. Ah, this should be closing whether on the top we have an opening bracket or not. अगर ऐसा होता है तो, या फिर s of I equals to and closing this and let me have one more bracket here, st dot top is equals to an opening of this or s of I is equals to a closing of this s of I st dot top is equals to opening of this. अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, हम पुश करेंगे उस, पॉप करेंगे उससे, उस स्टैक से. एक बार चेक करते हैं, बहुत सारे ब्रैकेट्स वगैरह है. सो s of I is closing and st dot top is this. This is one condition, this is another condition, and we have this condition here, and we are finally closing this particular bracket, and we are popping it out. Okay, or else okay, is it fine? Let's check once. S dot size 0 अगर हुआ तो false. स्टैक में एक स्टैक इनिशियलाइज किया, फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट्स है तो उसमें पुश कर दो, कुछ सोचना नहीं है. बट अगर ओपनिंग ब्रैकेट्स नहीं है तो वी नीड टू चेक अगर खाली है या नहीं. अगर खाली नहीं है देन वी नीड टू चेक वो मतलब ऊपर वाला जो ब्रैकेट्स है वो उससे मैच कर रहा है नहीं, जस्ट जो एलिमेंट आ रहा है उससे, एंड देन वी विल बी popping it out. Okay, we have a double bracket somewhere. This is the keyboard's fault. Hmm? Let's submit and see. Okay, so we are getting this case as false. So now what does this do is, we have an opening bracket. So yeah, this pushes it into this. Now we have a closing bracket. Okay, this. Okay, so this case is not satisfied and hence we need to write an else here. कि अगर ये भी नहीं होता तो हमें false भेजना है. अभी चेक करो. मतलब कि क्या बोल रहा है कि ये तो पुश कर दिया ना, बट ये केस तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है.
है ना? ना ही ये केस सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हमको तुरंत वहां पे उसी टाइम पे फ्लैग करके फॉल्स रिटर्न करना होगा। या ओके, सो दिस वाज जस्ट अ बिट लेंथी क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट जो था वो इम्पोर्टेंट है कि वी आर चेकिंग ऑल द टाइम, वी आर चेकिंग द element that exists in the top of the stack in order to pop it out. Okay, since see if we were given a single bracket तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, अगर ऐसा ऐसा दिया रहता और ऐसा ऐसा दिया, सो वी कुड जस्ट हैव काउंटेड इट, राइट? और नहीं तो स्टैक में भी कुछ चेक नहीं करना होता, ये दिया रहता तो पुश करो, ये दिया रहता पॉप करो, और फिर बता दो कि खाली है या नहीं स्टैक। ठीक है, तो अगर ऐसा रहेगा तो दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हमें तीन ब्रैकेट्स दिया ही इसलिए है सो दैट वी चेक थिंग्स। ओके, और कुछ बाकी रहा इस क्वेश्चन में बताने को? आई गेस नहीं। तब फिर हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज, वी आर जस्ट इनिशियलाइजिंग एन स्टैक एंड वी आर pushing half of the elements, so that is n by 2, right? और जो हमारा time complexity है that is order of n, because we are traversing across all the uh, elements that is present in the string. Okay, so you're pasting it here. ठीक है, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ले, बस यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ n लगता है जहाँ पे n साइज ऑफ द स्ट्रिंग है। दीज आर ऑल ओ ऑफ वन। हाँ, एक चीज मेंशन करना भूला है यहाँ पे कि ये सारा ऑपरेशंस जो है ना, ये सारा ऑर्डर ऑफ वन टाइम में एग्जीक्यूट होता है। आई मीन इफ यू आर पुशिंग इट, यू जस्ट हैव टू पुश इट इन द, जस्ट हैव टू इंक्रीमेंट टॉप एंड जस्ट keep that element there, so it takes order of one. This also takes order of one. This also is a lookup that takes order of one, and this is of course order of one, just checks whether the stack is empty or not. Okay, cool. The size is also dynamically like checked, so that is also takes order of one. Don't have to worry about that, and we are left with nothing so far, and I guess we can move on to the next question if that's the case. Especially mention order of n. Cool, where n is the input size. Let's move on to the next question then. What's the time? It's 39. Cool, we are quite okay according to the time. अभी इस पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, एक बार ही देखना होगा कि बोल क्या रहा है। Min stack. Design a stack that supports push, pop, top, and retrieving the minimum element in constant time. In constant time, that is order of one. Okay, वो वन में हमें देना है सारा चीज। Implement the min stack class। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट ऊप्स का भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। So, cause if you see here, this is all like abstracted in a class, right? This is all like put in a class, and then we'll be creating an object. Is it written here? Yes. See, uh, we are creating an object obj. Okay, and this is the constructor of the class. So an object is created. We are pushing the value into the object. So this object is using a method that is inside the class. That is a member function we say, and we are popping it out. Okay, okay, and then we are returning an object, we are returning an integer rather whenever we are asked to tell what is there in the top of the stack, and it is stored in parameter 3 and parameter 4. This same goes with the get min. Okay, where were we? This cool. So we'll
see a bit of concepts of the class and the member functions and member variables and stuff. So let's see what it says. Min stack initializes the stack object. So what is a min stack? A min stack. This min stack is nothing but a constructor. This is called a constructor, which is constructing the object. Okay. तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया. अभी void push int value is a function, push function, pushes the element value into the stack. Pop, of course, pops the value. Top returns the top of element of the stack. Get min retrieves the minimum element of the stack. And then again we need to do it in order of one time. Okay. So इसका अगर हम लोग ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम देखें तो वो ऑर्डर वन टाइम में तो नहीं होगा बिकॉज दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन. बट हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखते हैं. ठीक है. तो ब्रूट फोर्स में क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो हमारे पास क्लास दिया हुआ है ना उसके अंदर हम एक स्टैक खुद से ही ले लेते हैं और एसटीएल यूज कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो पब्लिक प्राइवेट पे भी नहीं आते, बाद में आएंगे. अभी के लिए वो दिस इज नॉट अ प्रॉपर कोड बट ओके यू विल अंडरस्टैंड. वी विल हैव अ स्टैक. ठीक है. एस टी के नाम से. और जब भी हमें पुश करने को बोलेगा तब हम एस टी डॉट पुश कर देंगे. जो वैल्यू एज अ पैरामीटर पास हो रहा है वो सिंपली वैल्यू के साथ. ठीक है. whenever we are told to pop we are just doing st dot pop and the stl internally handles it all. Okay. Whenever we are doing top we just do st dot top. So till now it is fine, well and good. But when we are told to get the minimum, what do we need to do is, as I told you, we need to traverse and hold on to what the minimum is. So how do we traverse? We need to create a temporary stack in order to traverse. उसी स्टैक में ट्रैवर्स नहीं कर सकते क्योंकि उस स्टैक से हम लोग हटा रहे होंगे चीजें फिर. ठीक है. हटा देंगे तो फिर बाद में अगर पुश करना बोलेगा तो उस हटे वाले मतलब हटा हुआ स्टैक पे पुश करेंगे ना हम लोग. तो दैट विल ऑफ कोर्स क्रिएट अ anomaly, right? So getMin function should create a temporary stack that will have that previous stack in it, and then we will have a minimum variable जो कि तुम int max लेके रखोगे पहले से. और फिर min को क्या करोगे, जो भी mini बोल देते हैं, चलो इसको mini is the minimum of the previous mini and जिस temporary stack के टॉप पे जो वैल्यू है इसमें. ठीक है. और फिर क्या करोगे कि टॉप से तुम पॉपअप, टॉप नहीं सॉरी टेम्प से, इस टेम्प से पॉप कर रहे होगे. ठीक है. तो हम मिनी अपडेट करते जा रहे हैं जो भी मिनिमम है और फिर लास्ट में हम मिनिमम रिटर्न कर देंगे. तो दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच जो कि यहाँ काम नहीं करेगा. इट्स क्लियरली रिटन दैट वी हैव टू डू इट इन ऑर्डर वन टाइम. इज इट ऑर्डर वन? नो, दिस इज ऑर्डर ऑफ एन. जो भी इनपुट साइज है जितना हमारा स्टैक बनेगा उस ऑर्डर के हो जाएगा ये. so this is something which we can't do. Okay. Now, are there any alternatives to this problem? Let's see. Take a moment and just think, where are we like facing the problem? So in we are not facing the problem in push, we are not facing the problem in pop, we are not, of course, not facing the problem in top, but we are facing the problem whenever we are told to get the minimum. Okay. So why not, one thing we can do is, every time we are pushing the element into the stack, say we pushed 1, then we create parallelly we create another stack. So this is a approach where we are using two stacks. Okay. And we are one by one mapping the elements of the original stack with the minimum value of that particular element. And now why we are doing that is because कि मान लो कि हमें बोला गया कि पहला एलिमेंट 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 1 है, फिर 7 है, फिर 8 है. ठीक है. ओके. तो अभी देखो तुम अगर जब पूरे ये सारा चीज स्टैक में रहेगा तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू 8? 1, राइट. 7 के अकॉर्डिंग 1 है. 1 जब तक है तब तक 1 है मिनिमम वैल्यू.
But if we pop out 1, then we have a minimum value of 4, not 1. This is where the problem lies. Okay, because we are continuously pushing and popping the elements, so we need to take care and we need to have this point in mind that we can push the minimum element at certain point. We can pop the minimum element at the certain point, and then the minimum element will change, right? You can clearly see, as long as 1 was present in the stack, our minimum element was 1. But say the user told us to pop 1 from that particular object, right? Then what will the minimum be? The minimum should be updated to 4. Okay. So in order to have this particular thing, we are just replicating this, but how? Let's see. So whenever we push, we have first of all have two stacks. Say we have a stack int st, and again we have a stack int min st, minimum stack. Okay. So whenever we push an element, what do we need to take care of is, if we are pushing the element for the first time, then we push it at both these stacks, right? st.push value or min st.push value. ठीक है, फर्स्ट टाइम। और ये कैसे चेक करेंगे, रुको। if st.empty, ऐसा लिख सकते हैं कि अगर स्टैक empty है, if the stack is empty, then we push value into the original stack as well as the minimum stack. Okay. But if the stack is not empty, else we push the value in the stack itself, the original stack, of course. But what do we need to push in the minimum stack? We need to push the minimum of the previous minimum, that is minimum st dot top. Because अगर हमारे पास 4 पहला बार गया है, तो ये मिनिमम st है मानो, और ये st है। तो जब हम पुश कर रहे होंगे तो पहला वाला को तो हम दोनों पुश करेंगे ना, 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ पे, ऑफ कोर्स दैट विल बी द मिनिमम। कूल। नाउ once we are done with the first element in both the stacks, what are we gonna do? We are placing 5 here, but we can't place 5 here. That will not be the minimum. We need to place 4. So we need to have the minimum that is at present at the top of this stack, of the min stack actually, and the value that we are pushing, right? So what is the minimum of 4 and 5? That is 4. Now we put 6, we still store 4 here. Okay. But as we put 1, we are bound to store 1 here and not 4, because minimum of 1 and 4 will give you 1, right? As we put 7, we have 1 again. If we have 8, we have 1 again. Cool. This is how we are pushing it into two stacks, mind you. Okay. This is the push operation. Cool. Now, how do we need to pop from the stack? ये जो पॉप ऑपरेशन रहेगा, ये क्यों डाल रहे हैं? See, the pop operation will pop out the thing which is at the top. तो सबसे पहले तो 8 निकलेगा, फिर 7 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा। तो जब तक 8 है, अगर हमको let's say after we push 8, we are asked कि भाई बताओ minimum क्या है? So if we are asked, or if the get min function is called, then 1 will be returned. So we will simply return, पहले get min देखते हैं को। If the get min function is called, we are simply returning minimum stack dot top. Okay, right? क्योंकि भाई वही तो मिनिमम में है ना, तो मिनिमम है, ओ भाई ऊपर में है। But if we are set to pop out 8, okay, so what we are gonna do? We are gonna pop s from st, but at the same time
we need to pop it from minimum ST as well. Think, जब तक 8 है हमारा मिनिमम 1 रहेगा, जब तक 7 है हमारा मिनिमम 1 रहेगा, जब तक 1 है हमारा मिनिमम 1 रहेगा. बट एज वी आर पुशिंग पॉपिंग आउट 1, तब देखो इसके साथ ये भी पॉप आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 4. ऑफ कोर्स यू गेट इट राइट. We are mapping the minimum elements from all the elements that are present in the stack one by one. Once we are popping out, we pop out from both the stacks. Okay. So this is how we can maintain two stacks that will help us get things at order of one time complexity. Okay. This is get min, and of course the top one is very obvious. Don't have to do anything but just return st.top. Okay. Look at the time complexity. Order one for all the operations. Check it out. We just have constant number of statements, and we are not running any loop, or we are not traversing into any stack elements. So the time complexity will be order one, but the space complexity here will be order of n, O of n, big O of n. But if you see, we have two stacks. Okay, so that is only one problem that we have. It is not optimized according to space. Okay. According to time, it is. According to space, it's not. In the next approach, we'll see how we can use it or give the solution using one stack only. Okay. First of all, let's implement this in LeetCode. Let's see how we go and like do things with this class functions. Okay. So let me tell you, there are two things. One is private and the other is public. So whatever you write here in private, whatever variables you declare is private to the class, and no other functions that are outside the class can use this private variable. Okay. Let me also tell you about private, public, and then one is protected. What this does is, again, you can't have a member function outside the class, but there is something called friend as a friend class. So you can have those variables in a friend class of that class. So you need to look at things. Oops is quite interesting. So if you look at things, then you'll get a better picture of this. Currently, we don't need to go into that much of depth. We don't even need private here actually. If you just don't write private, even then it works. But again, we need to have a stack int integers, right? st, and we need to have a minimum stack. So stack int min st. ठीक है, इसको भी के लिए पब्लिक के लिए डाल दो. हम्म. तो अभी ये वाला हम लोग सारा पूरा क्लास में यूज कर पाएंगे. अभी जब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, रादर जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, सो डू वी नीड टू इनिशियलाइज थिंग्स हियर? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट? बट whenever we are pushing a value, right, then we need to do stuff. So what are we going to do is, if the stack is empty, that means we are pushing for the first time. So what we do is st.push value, copy paste, write st.push value, else of the keyboard bits. Okay, fine. So पहला element तो push हो गया. अभी next time whenever we do is, we of course need to push the value. But what do you need to push in the minimum stack? We need to push the minimum of the value that we encounter and min stack का top वाला value. I guess it's correct, right?
उसके बाद क्या करना है? पुश फंक्शन हो गया। जब भी हम पॉप करेंगे तो हम्म, यहाँ पे देखो, पॉप करने पे अगेन वो ध्यान में रखना है कि if st.empty, you can't pop and you hence return, since it's void, so you return nothing and just you return, uh, or rather you end the function, exit from the function. Okay. Else what you're gonna do is you're gonna pop out the top from both the stacks. Hmm? This is quite simple. This just returns st.top. What does get min will do? It will return min st. अब नीचे जो भी करे हमें तो इससे मतलब है, और यहाँ से हो जाना चाहिए। हम्म? दो स्टैक लिया, यहाँ पर ठीक है। पुश करने समय एम्प्टी रहा तो दोनों को पुश किया। अगर ये काम नहीं करता, इफ दिस फंक्शन, the minimum function will not be executed inside this, then we'll change it and we'll write it above. Let's see if it works. uh, so we are popping from both this. Issue. What's the issue here? Okay, this works. Let's submit. Let's see if it works. Right? The time complexity is fine. It's order one, but the memory is what we can optimize. So let's see how. Now, the वो memory optimization वाला जो part है वो थोड़ा सा to get into that thing is a bit uh, not tricky, but yeah, it will require certain amount of time to think and get to that particular thing. Yeah, so if we can include that in all code. It's fine. Now let's see how we can optimize onto this particular space, the memory. Although it's order of n, but we can do things using a single stack also. How? Let's see. Single stack. I hope things are clear by now, how stack is working, how we are using that last in first out principle, and how it's helping us to, you know, do certain specific tasks. Even if you study recursion, you will have to know stack. Okay, this is a very important topic. Now let's see how we can handle things using a single stack. Taking an example, say, what's the example given here? इसी को ले लेता. What are the things they are pushing? -20, -3. Let's take an example on our own. मानो ये स्टैक है हमारा और हमने लिया 10, हमने लिया 12, फिर हमने लिया 5, फिर हमने लिया 13, और फिर लेट्स से 6 और 1. ठीक है. So these are the elements that we are gonna push. Okay, this is not a stack. Let's not consider this as a stack. These are the elements that we are gonna push into the stack, into our stack.
ठीक है, ये हमारा स्टैक है। तो पहले हमें बोला कि भाई तुम 10 को पुश करो, ठीक है। फिर बोलेगा कि 12 पुश करो, फिर 5। सो जब 10 पुश होगा तो हमारा मिनिमम क्या होगा, 10। जब 12 पुश होगा मिनिमम 10 होगा, जब 5 पुश होगा 5 होगा, 13 होगा 5 होगा, 6 होगा तब भी 5 होगा, बट जब 1 होगा 1 होगा। ठीक है, ये हमारा वो टू स्टैक वाला यूज करके ऐसे ही है कुछ। बट अगर हम लोग स्टैक में इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द एक्चुअल एलिमेंट्स, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एक्चुअल एलिमेंट्स, ये हम लोग ना करके, व्हाट इफ वी स्टोर encoded elements? Now what do you mean by encoded elements? Encoded elements is nothing but just the same element, but we are performing a certain function on that element. The function can be any operation, additive, multiplicative, or you subtract, anything. Okay. How can we exploit this particular thing here is, you can take some time and think, but let me, since we have already exhausted our time for today, I'll tell you how are we storing the encoded elements. What we do is we store the value that we are pushing minus the current minimum, ठीक है। इसको यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो जब पहला वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो मिनिमम 10 ही है ना, तो व्हाट वी आर स्टोरिंग इज 10 माइनस 10, दैट इज 0। ठीक है, ये गया यहाँ पे। जब ये आया 12, तो व्हाट वी आर स्टोरिंग इज 12 माइनस 10, सो वी स्टोर 2। एंड सिमिलरली नाउ व्हेन 5 कम्स आवर मिनिमम बिकम्स 5, राइट। सो बट उससे पहले मिनिमम क्या था, 10। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 माइनस 10 को यहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है, विच इज माइनस 5। ओके, now whenever we are encountering something that is negative, we know for certain that the value here is greater than this. So what we do is we shift the minimum from this point to this point. अब हमें पता है कि भाई तुम्हारा मिनिमम 10 होके हो गया, अब तो 5 है, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर आता है। ओके, अब 5 के अकॉर्डिंग करेंगे। जब 13 आया तो 13 माइनस 5 किया, और क्या स्टोर किया, वी स्टोर्ड 8 here, right? When 6 comes, so 6 minus 5 we store 1, but when 1 comes we are storing minus 4, that is 1 minus 5. We change the color here. This is nothing but when 1 comes we are storing 1 minus 5, that is minus of 4. Now what is the logic behind this? That once we create such a stack, this kind of stack, how we can exploit it is कि जब भी हमें बोलेगा push करने को, तब as I told you we are pushing value minus minimum, और we will check कि minimum क्या है, check on minimum, check minimum और update it। ठीक है, तब तो अगला बार जो माइनस करेंगे, जैसे 5 से माइनस किया तभी तो अपडेट होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम पहले से बना के रखना पड़ेगा, इनिशियलाइज करके, लेट्स से मिन। ठीक है, एक मिनिमम पहले से ही रखना पड़ेगा। और वो कब रखेंगे हम लोग, जब पहला बार इनपुट ले रहे होंगे ना, तो मिनिमम को 10 ये कर देंगे, 10 से डिक्लेयर कर देंगे उसको। ठीक है, ठीक है, पुश तक तो ठीक है। अभी देखो जब पॉप करने का बारी बारी आएगा, तो पॉप हम लोग यहाँ से थोड़ी कर सकते हैं, -4 तो पॉप नहीं हो रहा, बट 1 को पॉप करना है। तो at the time of popping we can check whether the element is negative or not। तो ठीक है, क्योंकि यहीं पे हम लोग मिनिमम को चेक करेंगे। अगर एलिमेंट नेगेटिव है तो हमारा मिनिमम क्या होगा, देखो, वैल्यू माइनस मिनिमम इज इक्वल्स टू ये स्टैक का टॉप वाला पार्ट, एस टी डॉट टॉप। तो हमारा मिनिमम यहाँ से क्या आता है, मिनिमम इज इक्वल्स टू वैल्यू माइनस एस टी डॉट टॉप, राइट। सो वी नीड टू अपडेट दिस पर्टिकुलर थिंग हियर, ठीक है, that our minimum will be equals to value माइनस उस पर्टिकुलर एस टी डॉट टॉप पे जो रहेगा,
वो वाला पार्ट। जब हमें टॉप बोलेगा टॉप एलिमेंट भेजो मेरे को, तो हमें अगेन -4 ना भेज के 1 भेजना है। सो इस टाइम हमारे पास मिनिमम मिनिमम क्या स्टोर्ड है, मिनिमम स्टोर्ड वी हैव 1। सो वी कैन डायरेक्टली इफ द एलिमेंट इज नेगेटिव, so you just return minimum. But if the element is positive, you need to return minimum plus what will be the value, minimum plus st dot top, that is the value। तो ये रिटर्न करना पड़ेगा। पॉप में तो सीधा पॉप करेंगे, बट हमें मिनिमम को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये वाला फंक्शन काम करेगा, गेट मिन वाला। ठीक है। अब गेट मिन तुम कभी बीच में मारो, हमारा मिनिमम डायनेमिकली अपडेट होते रहेगा, और ऐसे तुमको टॉप वैल्यू दिखाना होगा, मिनिमम प्लस st डॉट टॉप। ठीक है। अगर इसको हम लोग कोड करने पे आए, तो यहाँ पे एक और कैच है जो कि हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। व्हाट इज दैट कैच? कि एक स्टैक तो ठीक है हमने इनिशियलाइज कर रखा है इंटीजर का एस नाम से, बट जब हम मिनिमम बना रहे हैं ना, तो देखो मिनिमम पे ना कुछ कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं, लाइक माइनस और प्लस। तो अगर इंटीजर का मिनिमम बनाते हैं, अगर हमारा मिनिमम एक इंटीजर हो, ओहो, इफ आर मिनिमम इज एन इंटीजर, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, इंट मैक्स और इंट मिन से होगा, ये ऐसा कुछ होगा हमारा मिनिमम, है ना। अब जब भी हम इस पे कुछ वैल्यूज प्लस और माइनस कर देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला वैल्यू हो और इस पे हमने कुछ प्लस कर दिया, तो इंटीजर का जो रेंज होता है ना, उसको वो बाईपास बाईपास बोल रहे, सॉरी, व्हाट डू वी कॉल दैट, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग दैट टर्म, ओवर समथिंग, आई मीन यू अंडरस्टैंड, ओके। मिनिमम वाला जो वैल्यू होगा ना, वो इंटीजर के रेंज से बाहर चला जाएगा। ठीक है। सो we can't take minimum to be an integer, and hence we can take minimum to be a long बना सकते हैं या long भी बना सकते हैं। बट जब हमें रिटर्न करना होगा, जब हमें रिटर्न करना है, तब हमें सिंस यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करना है, तो उसको हम लोगों को एक्सटर्नली ये करना पड़ेगा कि भाई तू मतलब इंटीजर है, आई मीन you'll have to change the data type there। ठीक है। सो लॉन्ग मिनिमम। ठीक है। अभी ये रखा, मीन स्टैक में कुछ नहीं करना, बट पुश जब करेंगे ना, तो हमने चेक करना है कि पहला एलिमेंट वापस से वही, कि अगर एस टी खाली है, minimum will be the value, and we need to push st dot push 0, okay, else minimum is the, else you push what value minus minimum, and then we need to also like have minimum stored, the first minimum will be the value itself, 10 आया तो 10 ही minimum है, और वो पुश करने के बाद we need to update the minimum, right? So minimum क्या हो जाएगा यहाँ पे, minimum of previous minimum comma value, इसको मिनी बोल लेते हैं वो, because min is a keyword in the algorithm, so mini बोल लिया, st dot push value dot, जो भी वैल्यू हमारा भेजा गया माइनस मिनी। अभी जब पॉप करना है, तो कैसे करेंगे, पहले तो जैसे कि हमने यहाँ बोला था कि let's look at top first। So in top, if st dot top is negative, then what do? You simply return minimum, else what you return,
you return minimum plus str, right? Right. ऐसे करने से क्या होगा कि जब भी नेगेटिव वैल्यूज आएगा तो मिनिमम ही रिटर्न कर देगा, बट जब जब पॉजिटिव वैल्यूज आएगा तो हमें टॉप, जो वो टॉप पे रहेगा उस पे वो मिनिमम को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। अभी क्या बचा, गेट मिन और पॉप। अभी यहाँ से गेट मिन क्या होगा हमारा। ये वाला सेम अगर वैल्यू ये लगाए चीज है। द minimum will be value plus or rather minus st dot top, right? And we are dynamically updating minimum. So whenever we are called to do this, we can just return the minimum because वो अपडेट हो रहा है। बट ये पॉप में क्या करेंगे कि अगर हमें वो तो चेक करना है कि sc डॉट एम टी अगर है, so just return else। यहाँ पे मिनिमम को अपडेट करना है अपने को एक्चुअली। ठीक है। तो एक पॉप लेते हैं जो हमारा st डॉट टॉप पे रहता है। ठीक है। मतलब कि हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते ना ये प्लस और माइनस, क्योंकि कुछ वैल्यूज जो हमारा मिनिमम है वो लॉन्ग में है। ओके। तो हमें जो ये वाला जो पार्ट है ये वाला हमारा इंटीजर हो जाएगा। सो उसको पहले हमने लॉन्ग में लिया है। दैट्स उसके लिए हमें यहाँ पे भी लॉन्ग में लेना पड़ेगा। या दिस इज एन, दिस इज नॉट एन इंटीजर, so we need to tell it that this should be an integer. Only then, okay, rather not integer but long. Only then you will be able to add things because you are adding the same data type, right? You can't add two different types of data type. Okay. ये रहा, पॉप को स्टोर किया फिर वहां से हमने हटा दिया। अब मिनिमम को अभी हमारा मिनिमम क्या हो जाएगा। Like see, if you are if we take an analogy from this example, so जब -4 था तो हमारा मिनिमम क्या था, 1। दैट इज द मिनिमम एक्चुअली। ठीक है, मिनिमम 1 था। बट जब हमने इसे पॉप पॉप कर दिया तो अभी हमें क्या मिनिमम ये करना है, दैट इज मिनिमम माइनस दिस पर्टिकुलर वैल्यू। समझ रहे हो। मिनिमम विल बी द एक्चुअल मिनिमम जो पहले था दैट वाज 1 माइनस दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तब तो ये वाला पार्ट आएगा। आई मीन what will minimum is r1 minus of -4 will give us 5। तो ये वाला मिनिमम आ जाएगा जो नेक्स्ट मिनिमम था। ठीक है। और सिमिलरली हम लोग दूसरा कहाँ पे फंसेंगे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम क्या आ जाएगा, दैट विल बी अभी का मिनिमम दैट इज 5 माइनस ऑफ -5 एंड दैट विल गिव अस 10। हाँ, तो ये होगा। तो ये लिख सकते हैं कि मिनिमम विल बी द करेंट मिनिमम माइनस ऑफ द टॉप वैल्यू। ठीक है। ये हो गया। आई होप आई एम करेक्ट, क्योंकि हाँ। now let's one check कि once check कि this is long ना, so we are not doing any operations into integer and mixing it with the long values। okay, this needs to be made mini is equals to val minus
Yeah, pushing into the stack. Popping it and then यहाँ पे होगा, ये वापस से लॉन्ग होना चाहिए। ओ नहीं, एक्चुअली इसके जगह पे हमने पॉप यूज कर सकते, पॉप ही यूज करना होगा एक्चुअली, क्योंकि एक बार ही पॉप कर दिया ना, तो एस डॉट टॉप यूज करेंगे तो वो पॉप्ड आउट एलिमेंट तो हट चुका है, तो उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट ले लेगा। So we need to have min is equals to min minus pop. Okay, and this is only done if st dot top is, or rather pop is negative, तभी चेंज करेंगे सिर्फ। और सिंस यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करना है तो हम लोग को एक स्पेसिफायर डालना पड़ेगा कि ये इंटीजर है। Let's see if it works. No matching function call for min. Okay. Why is it so? Reference to overloaded function could not be resolved. अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आगे में मिन लिख कर रखा है क्या? Mini is mini minus pop. Mini mini. Okay, right? So this is quite a bit थोड़ा ऐसा confusing, cause you'll have to check कि कब हमें change करना है minimum dynamically, कि जब जब pop out हो रहा है, if that number on the top of the element is negative, so we can use something like this, okay, to tell कि now we need to change the minimum back to something that was the previous minimum. Let's see if it gets submitted now. What's the problem here? Okay, there's something wrong with the minimum part. Have to check once. This is fine, I guess. stmt pop. That is fine. If it is greater than 0, then should be fine. Or we can write it this way. Long top पहले लेते हैं instead of top. What did we say? If top is greater than 0, then you return top plus mini, or else return
Getmin is right, I guess. So that doesn't. Um, let's check now. Maybe this long and int is doing some problem and it. Okay, no. This point and this point. Mhm. Which operations is it? Get min and get min. Okay. No, get min for get min and top. Get min will return mini. That's okay. Return top is greater than zero. Integer top plus mini. Integer. This will be okay. Or else just return minimum. And then we'll have to check this one stack wall approach. As far as I think, we'll need time to look into this. Hmm. We'll need time to think. Okay. There is some problem. Okay, I'll just check it and give it in the notes. You can check it from there because it has been time already. We have implemented it using two stack. The single stack wala I'll have to check a bit. But you get the concept, right? If you do something like this, that we store value minus minimum, then when we pop out the value, we will constantly check if the value is the minimum or not. If it's the minimum, it will be negative, and we'll update the next minimum using this principle, like the previous minimum minus the value at the top of the array. That will give this. Why is it not working? I don't know. Or if you need to check, fine. Just put it in GPT and check for now. What's the error? Overflow. Yeah, exactly. This is something which will be stack long. Top should handle empty safe stack safely. So previous minimum. I don't think this is required. Maybe this, but this is not the case. There is something in this only, the long and integer wala thing. Let's substitute with long only. Let's see if it works. तो हम क्या कर रहे हैं, पुश जब कर रहे हैं अगर स्टैक एम्प्टी है जीरो डाल रहे हैं एंड मिनिमम इज द वैल्यू, मिनी इज लॉन्ग वैल्यू, ऐसा होना चाहिए. ठीक है. एल्स स्टैक पुश वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. ओके, दिस शुड बी. If I'm having long, then val is integer. Is this, so let's have this as long.
means pop long top is instead of top. Cool. Clear it seems fine. Long top is st dot top. Hmm. Top is greater than 0. Let's just have it in integer only. Top plus mini, int mini. This is the last try. Let's see if it works. Fine. It does. Cool. The time complexity, I don't know why it gives, but these are all order of one only. So yeah, that was the only problem. वो long और integer में दिक्कत हो रहा था कुछ. You need to explicitly specify that it's a long variable, and then things will work fine. Cool. Integer में भी हो जाता, but कहीं कहीं changes लगता. जैसे changes कर करके देखना पड़ता है, and it's fine. So done, so done. कोड चल रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है, रहने दो. समझ भी आ गया ना, लॉन्ग और इंट, मतलब लॉन्ग और इंट में कब कब चेंजेस करना पड़ेगा. यू कांट लाइक डू ऑपरेशंस विद टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, राइट. तो वो डेटा टाइप सेम हो तभी तो. A+9 क्या होगा. सो हियर यू मे गेट द आंसर A+9 अगर ASCII में लेके रखोगे, बट स्टिल यू गेट व्हाट आई मीन. ओके. ओके ओके ओके, इसको नंबर के साथ डालते हैं. ये कोड भी ऑर्डर ऑफ वन लेता है सारा सारा ऑपरेशंस के लिए. यू कैन क्विकली चेक. पुश जो है एक कंडीशन चेक करता है बस, और सिर्फ पुश करके ये सारा जितना भी है ऑर्डर ऑफ वन ही लेता है. ठीक है. ओवरऑल ओवरऑल ये ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन ही लेगा. इसी ये भी है जो सिंपल कंडीशंस है. सो ओवरऑल ये भी ऑर्डर ऑफ वन लेता है. जो टॉप है वो ऑफ कोर्स एक कंडीशन चेक करके हमें बता रहा है, और ये तो ऑर्डर ऑफ वन लेता ही है, सिंगल स्टेटमेंट लिखा है. सो ओवरऑल वी यूज वन स्टैक and over one time obviously, and hence this is the best we can achieve. ये सारा मिल जाएगा नोट्स ड्राइव पे, नोशन पे, क्वेश्चन अपडेट हो जाएंगे. ओके, टिल देन सी यू, बाय बाय.